Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study analytic function. This is very important and the center part of complex analysis. आप इसे डिफरेंशिएशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन समझ सकते हैं। जब कभी भी हम किसी डोमेन पर डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट आता है। सो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन इन टू वे। In the first one, we will study the analytic function in an open set, and then we will see analytic function at a point. Okay, so definitions. First, we will see analytic in an open set. So it says a function f of a complex variable z is analytic in an open set S if it has derivative everywhere in the set S. ओके, तो अगर ओपन सेट के हर पॉइंट पर f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तब हम इस फंक्शन f को s पर एनालिटिक फंक्शन कहेंगे. सो दिस इज अबाउट द एनालिटिसिटी इन एन ओपन सेट. ओके, नाउ द सेकंड इज द analytic at a point. So a function f of a complex variable z is said to be analytic at a point z naught if f has a derivative everywhere in some neighborhood of z naught. Okay, so this is about the analyticity at a point. तो हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे z नॉट. अब अगर इस z नॉट के लिए हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, इट में भी हो सकता है ये नेबरहुड हो सकता है बहुत छोटा हो सकता है लार्ज रेडियस का हो, हमें कोई भी एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसके हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में वी विल से दिस फंक्शन f इज सीड टू बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट. ओके, सो किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए वी रिक्वायर्ड अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट and then the differentiability of the function f at every point. Okay, now look at the beauty behind this. Suppose we have this is z naught and suppose this is the neighborhood जिसके हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन f डिफरेंशिएबल है. ओके, द मोमेंट आई एम कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, तो क्या हम इस पॉइंट को भी अभी एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कंसिडर कर सकते हैं. सो फॉर दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ नेबरहुड लाइक दिस. ओके, तो क्योंकि इस जेड नॉट के हर एक नेबरहुड की हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी तो है ही, तो इस पॉइंट पर भी वो सारे पॉइंट आएंगे ही जो इस जेड नॉट की नेबरहुड में आ रहे थे.
लाइकवाइज हम इस पॉइंट पर भी एक नेबरहुड कंसिडर कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी नेबरहुड कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या हम z नॉट पर एनालिटिसिटी होने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शन इस z नॉट के नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर भी एनालिटिक है? क्योंकि नेबरहुड हमेशा ओपन सेट होते हैं, तो हम हमेशा इस तरीके के पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं और वहाँ पर इस तरीके के नेबरहुड बना सकते हैं। और जैसे ही नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हमें इस फंक्शन की एनालिटिसिटी मिल जाएगी। सो एट अ पॉइंट पर एनालिटिक होने का ये सेंस है, राइट? अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि जब हम किसी फंक्शन का एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं और हमने ये देख लिया है कि वो किसी एक पॉइंट पर ही एनालिटिक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी एक पॉइंट पर ही एनालिटिक हो, बाकी किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक ना हो? सो यू कैन सी दिस सिनेरियो। अगर हम सपोज कर लें कि z नॉट पर ही एनालिटिक है, तो हम इस पॉइंट पर एनालिटिक होने की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और हम हर एक पॉइंट का भी नेबरहुड कंसिडर कर सकते हैं। और उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर भी, क्योंकि डेरिवेटिव तो पूरे के पूरे इस ग्रीन डिस्क में एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो इन स्मॉल रेड डिस्क में भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एंड द मोमेंट वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट इन दीज रेड डिस्क, इसका मतलब ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं इन रेड डिस्क में, इन पर फंक्शन एनालिटिक हो गया, क्योंकि ये सभी इसी के ही नेबरहुड्स है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर जैसे ही फंक्शन एनालिटिक होता है, वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स पर भी एनालिटिक होता ही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज द एनालिटिक फंक्शन, राइट? तो जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं कि हमने इस फंक्शन को देखा था, राइट? ये केवल ज़ीरो पर ही डिफरेंशिएबल था, बाकी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं था। तो ऐसा हमें कभी भी सिनेरियो एनालिटिक फंक्शन में नहीं मिलेगा कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एनालिटिक हो रहा हो, बाकी किन्हीं पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, सो आप इस सिनेरियो से समझ सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट, राइट? सो in case where f has a derivative, this is derivative, right, everywhere in some neighborhood of z naught, then z naught पर हम function f को analytic कहेंगे, right? And the moment we have the analyticity of a function at a point, that means the function is analytic at uncountable number of complex points. Now we have some observations. The first observation is that if f is analytic at a point z naught, it must be analytic at each point in some neighborhood ऑफ z नॉट, राइट? ये अभी जो हमने डिस्कशन किया था वही हमने लिखा है। अगर z नॉट पर एनालिटिक है तो इसके इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर भी एनालिटिक होगा। देन द सेकंड थिंग सेज अ फंक्शन दैट इज द एनालिटिक इन अ सेट। तो हम सेट पर एनालिटिक होने का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? द सेट कुड बी एनीथिंग, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, लाइक दिस, ओके? सो अ फंक्शन that is analytic in a set S. Now S could be any set, okay? That is not open, okay? The moment we have the set is open, then we have the definition कि ये इसके हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है? इन केस वेयर द सेट एस इज नॉट ओपन, तब किसी सेट पर एनालिटिक होने का क्या सेंस है, दैट वी आर राइटिंग हियर, दैट इज नॉट ओपन
it is to be understood that F is analytic in an open set containing S. Okay, so suppose we have this set S and this is suppose not open. Okay, it has some boundary. Okay, not open set है S, तो S पर फंक्शन के एनालिटिक होने का क्या सेंस है दैट देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट, दिस इज द ओपन सेट whose every point is interior point, right? So there exists some open set on which our function is analytic and that contains this set as completely. Okay, so this is what do we mean by the analyticity at any set which is not open. सो हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी किसी पॉइंट पर और ओपन सेट पर और ऐसे सेट पर जो कि ओपन ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम डिफरेंशियबिलिटी के थ्रू कैसे एनालिटिसिटी को डिस्कस करते हैं। लेट मी मेक अ मोर थिंग क्लियर दैट इज ये सेट एस कैसा भी सेट हो सकता है। तो हमने कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सेट लिया एस, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हो सकता है। तो इन केस वेयर द सेट इज द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, उस केस में अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तब हम उसे एंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट दी दैट डेफिनेशन फर्स्ट। सो वी हैव द डेफिनेशन ऑफ entire function, and that is an entire function is a function that is analytic at each point in the entire complex plane. ओके, अगर हर एक पॉइंट पर ही एनालिटिक हो जाए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के तब हम उस एनालिटिक फंक्शन को एंटायर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू सम डेफिनेशंस सो दैट वी कैन क्लियर the concept of analytic function. Okay, so let me tell you some example first. First example we are going to considering that f of z equals to 1 upon z. ठीक है, अगर फंक्शन हमें गिवन है देन what about its derivative? Its derivative at any arbitrary point is minus 1 upon z square. एंड वी नो ये कब एग्जिस्ट करेगा जब z नॉन जीरो हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा डोमेन जिसमें z इक्वल टू जीरो कंटेंट नहीं करता हो उस डोमेन में हमेशा माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये एग्जिस्ट करेगा पूरे के पूरे डोमेन पर तो उस केस में एनालिटिक हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इज एनालिटिक in any neighborhood that does not contains the 0 point, right? So you can see, so this is true when z is not equals to 0. So f prime z exists at all non zero complex number, right? Thus fz is analytic in any neighborhood or set that does not
contains z equals to 0 point. Okay. Now we have a different kind of example जो भी हमने just बात की ही थी इसके बारे में. Suppose f of z equals to square of absolute value of z. Okay. Then f prime z exists at only z equals to 0, and in that case f prime 0 is equal to 0. तो हम ये कह सकते हैं पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में केवल एक z इक्वल टू 0 पॉइंट ही है जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो केवल इस पॉइंट पर ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो उस केस में जब भी हम इस पर कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, चाहे कितनी भी स्मॉल रेडियस का, उसमें इस ज़ीरो के अलावा तो पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे. और हमें बताया कि जब भी ज़ीरो के अलावा कोई पॉइंट्स है उस पर ये फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है ही नहीं. और जब डिफरेंशिएबल नहीं है इस z ज़ीरो के किसी भी नेबरहुड में, इसका मतलब ये एनालिटिक है ही नहीं. ठीक है. सो दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली z इक्वल्स टू 0. सो there does not exist any neighborhood of z equals to 0 such that f is differentiable at every point of that नेबरहुड. ओके. अब अगर ऐसा कोई नेबरहुड है ही नहीं तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं. ओके. थस f is not एनालिटिक. और इस तरीके से आप जब लिखते हैं तो यहाँ पर हमें पॉइंट अगर हम मेंशन नहीं कर रहे, दैट इज we are talking about the any kind of arbitrary complex number, but you can specify here that z equals to 0 also. Okay. So thus f is not analytic at z equals to 0. अगर हम यहीं तक रोक देते हैं इसका मतलब you can treat any arbitrary point, और ये जो डिस्कशन है वो arbitrary point के बारे में है. बट अगर हमें कोई पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो वी हैव टू रिटर्न हियर दैट 8z इक्वल्स टू 0, राइट. So this is about the analyticity of a function.